Hello students, today we are going to discuss electricity and the first topic of this chapter is electric currents. So the definition of the electric current is the rate of flow of electric charges through the cross section of a conductor is called electric current. The rate of flow of electric charges through the cross section of a conductor is called electric current. We know that we are using the symbol I for current and Q for charge and time for T for time. So that according to that definition, the mathematical expression for the current will become I is equal to Q upon T, means the rate of flow of charges. So I is equal to Q upon T means coulomb per time, coulomb per second. Now that will be the unit for the electric current. So how can we define the electric current? The rate of flow of charges through the cross section of a conductor is called electric current. Now unit for the electric current is ampere. Now look at this. For example, if you put the unit of the charge, which is coulomb, and the unit for time is second, and that is actually ampere. This is called coulomb per second is called ampere. Now how can we define ampere? When 1 coulomb charge is passing through the cross section of a conductor in 1 second time, 1 coulomb charge in 1 second time is called 1 ampere current. So the current will be 1 ampere if there is exactly 1 coulomb charge passing in 1 second time through the cross section of a conductor. So that much current will be only 1 ampere. Now direction of the electric current. So what is the direction of the electric current? So actually we have two kinds of current. One is called electronic current, which is due to the flow of electron, and the second one is the conventional current, which is due to the flow of electric charges, positive charges, sorry. So now what is electronic currents? Actually the electric current in a conductor is caused by the flow of electron from the negative terminal to the positive terminal, or from the lower potential to higher potential. This current is called electronic current, because actually this current, which is due to the flow of electron, it has been said that the electric current in a conductor is caused by the flow of electron. So that's why it is called the electronic current. Okay. So the second current is the current due to the flow of positive charges. Actually, if we draw a diagram for this one. Now let's say this is here is a resistance. For example, there's some kind of load here, and this is positive, this is negative terminals of the battery. Now what will happen? Electron flows from here. This is electron which is moving from here in this direction, passing through the load and then returning back to the positive terminal of the battery. Okay, look at this. This is that same electron which is coming here. So this current is called electronic current. But at the same time, the positive charges also move from the positive terminal towards the negative terminal. This positive charge is moving from the positive terminal to the negative terminal, and this current is called the conventional current. Actually, this is the old beliefs, but still it's working here and it is in use. So the current due to the positive charge is called the conventional current. Okay. Now the next topic is Ohm law. Ohm law, the very important topic of this chapter is the Ohm law. So now how can we define the Ohm law? The current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the terminals of the conductor, if the temperature and the physical condition of the conductor does not change, means remain constant. So Ohm law, now it has been done. So Ohm law, mathematical expression. For example, the current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the terminal of the battery. For example, conductor, sorry. So this is current
passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied through the cross section of the conductor. So now this is Ohm law. Now how I is equal to direct. Now we can change the proportionality into equality symbol, or this is become equality. Now V here is a constant here, R V. Okay, this is called the constant of proportionality, called the resistance of the conductor. ठीक है, इसमें ये होता है कि यानी एक करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, और इस प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट में इक्वलिटी सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट हम लगाते हैं. इस कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. And this resistance depends upon the different material have different resistance. For example, iron has a different resistance from copper, copper has a different resistance from brass and from other. So every element has its own resistance. Therefore this the value of the R is changing from material to material. Okay, so this is now so we can write this one for example. Okay, let me do it with little more detail and उसके लिए हम ये करते हैं कि I जो करंट है is equal to KV. एक्चुअली K क्या है, क्योंकि अब R हम आगे जाके लगाएंगे, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया था. K is the conductance of the conductor. एक्चुअली K is the conductance of the conductor. ठीक है, और अगर हम इसको इस तरीके से कर दें, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको V को इधर छोड़ दूँ और ये K को इधर लेकर आऊँ तो 1/K हो जाएगा, या इसको चले I लगा दिए I और K इधर आके 1/K हो जाएगा. एक्चुअली 1/K जो हमारे पास है 1 कंडक्टेंस, वैल्यू ऑफ द कंडक्टेंस, ये हमारे पास रेजिस्टेंस कहलाता है. तो 1/K हमें पता है कि 1/K रेजिस्टेंस के बराबर है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. तो पुट वैल्यू फॉर 1/K विच इज़ R, सो दैट विल बिकम V इज इक्वल टू IR, विच इज़ एग्जैक्टली द ओहम लॉ है, उसको ओहम लॉ कहते हैं. V इज इक्वल टू IR वेयर R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. और अगर हम R की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो R इज इक्वल टू V/I हो जाएगा. ठीक है, वोल्टेज अपन करंट. अब हमारे पास जो है हम इसको R को डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द वोल्टेज टू द करंट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. अच्छा, R के लिए जो यूनिट होगा, वोल्टेज के लिए हमारे पास वोल्ट एक यूनिट आता है और जो करंट के लिए एम्पेयर होता है. अब इसी से हम एक यूनिट अखज़ करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ओहम कहते हैं, ओहम. ठीक है, ये ओहम विच इज़ द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. अब ओहम को हम डिफ़ाइन किस तरीके से कर सकते हैं, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लियर है, उसके डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हम ये कर सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी 1 ओहम इफ 1 वोल्ट of potential difference applied through the cross section of a conductor and a current of 1 ampere is passing through it. So वो जो रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का that will be 1 ओहम हो जाएगा. अगर आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उस कंडक्टर में से एक करंट 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा होता है, तो जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होगा that will be 1 ओहम. तो ये उसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई. जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ओहम लॉ का वो कुछ इस तरीके से होगा. अगर आप इसको इस वोल्टेज इधर लगा देते हैं और इधर आपके पास जो है ये करंट जो है वर्टिकल आप करंट शो कर रहा होता है, तो उस सूरत में क्या होगा कि दोनों चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप एक वैल्यू को बढ़ाते हैं तो इधर ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी, इस तरह से इसकी वैल्यू और बढ़ाएंगे तो वैल्यू और बढ़ती जाएगी, इस तरीके से दोनों चीज़ें. तो हमारे पास जो एक्चुअली जो लाइन आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस तरीके से. ठीक है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा. उस सूरत में हमारे पास जो लाइन आएगी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगी. तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम लॉ. ओहम लॉ की कुछ लिमिटेशन है और वो 2 तरह के हैं. एक तो ये है कि ओहम लॉ तब एप्लीकेबल होगा अगर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट्स.
if you keeping that resistance of the conductor constant, so Ohm law will be applicable. Otherwise, if the resistance is changing, for example, if you are increasing the voltage and at the same time the resistance of the conductor also increases with the increase in voltage, so then Ohm law will not be applicable here. And the voltage, you are increasing the voltage, but the current will not increase in the same amount because the resistance is increasing, and due to the resistance in the conductor the current will decreases. So उस रेशो में करंट इंक्रीज नहीं होगा जिस रेशो में आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ओहम लॉ में अगर आप ओहम लॉ को डिफाइन करते हैं तो उस सूरत में वोल्टेज करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। लेकिन जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, जो है रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता और रेजिस्टेंस कांस्टेंट अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो उसके साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो उस सूरत में फिर जिस रेशो से आप वोल्टेज को बढ़ा रहे होते हैं उस रेशो से करंट फिर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर ओहम लॉ वहाँ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर आप एक दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर, जिसको मेटालिक कंडक्टर भी कहते हैं, और एक है नॉन ओहमिक कंडक्टर। यानी ओहमिक कंडक्टर वो होता है जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे होते हैं और उसी रेशो से करंट बढ़ रहा होता है और रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है। तो उसको हम या दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि वो कंडक्टर जो ओहम लॉ को उबे कर रहा होता है, ठीक है ना, जिसके ऊपर ओहम लॉ एप्लीकेबल होता है, उसको हम मेटालिक कंडक्टर या ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जिस पे ओहम लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये दो लिमिटेशन है आपके पास। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो उस सूरत में ओहम लॉ एप्लीकेबल होता है, जिस रेशो से आप वोल्टेज बढ़ाते हैं उस रेशो से करंट बढ़ता है। इस तरह से अगर आपके पास मेटालिक कंडक्टर है तो ओहम लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर नॉन ओहमिक कंडक्टर है तो उस सूरत में ओहम लॉ फिर जो है एप्लीकेबल नहीं होगा उसके ऊपर, और फिर ज़ाहिर है ओहम लॉ यानी वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर नहीं होंगे।